अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सप्लेनेशन का वो है सब्लिमेशन। इसकी पहले हम डिटेल पढ़ेंगे कि सब्लिमेशन है क्या, फिर हम इसकी एग्जांपल्स चेक करेंगे, उसके बाद हम सब्लाइम मटेरियल स्टडी करेंगे, उसके बाद जो है हम इसका प्रोसीजर देखेंगे। लेट्स मूव ऑन। Sublimation is the transition phase of a substance directly from the solid phase to gas phase without passing through the intermediate liquid phase। यानी सब्लिमेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डायरेक्ट ट्रांजिशन अकर होती है। कोई भी सब्सटेंस हमारे पास सॉलिड फेज़ के अंदर पाया जाता है और वो विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज़ चेंज हो जाता है गैसियस फेज़ के अंदर या वेपर फेज़ के अंदर। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। नॉर्मली जब कन्वर्जन हो रही होती है तो सॉलिड मेल्ट होता है लिक्विड में और फिर वेपोराइजेशन होती है, लेकिन सब्लिमेशन हमारे पास एक ख़ास टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं जिसमें पहले जो होता है सॉलिड वो चेंज होता है डायरेक्टली किसके अंदर? गैसियस फेज के अंदर, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज, दैट इज़ इंटरमीडिएट फेज। Sublimation is an endothermic phase transition that occurs at temperatures and pressure below the triple point of a chemical in the phase diagram. Sublimation is an endothermic phase transition. It is a reaction in which heat is absorbed to bring about the change of a solid phase into gaseous phase without passing through the liquid phase. We can see the examples of sublimation in our daily life. The best example of sublimation is dry ice, which is frozen form of carbon dioxide. Frozen form or dry ice basically represents solid carbon dioxide. It is formed by direct conversion of solid phase into gaseous phase, and there is no conversion between intermediate phase, that is liquid phase. Another well-known example of sublimation is naphthalene, which is an organic compound in which two benzene rings are present. Here naphthalene also undergo the process of sublimation in which direct conversion of solid into gaseous phase take place without passing through the liquid phase. These are the two general examples of sublimation in our daily life. Now we can see the sublime materials that are generally showing the process of sublimation. The first one is ammonium chloride, second one is iodine, third one is naphthalene, and fourth one is benzoic acid. These all are the sublime materials that show the process of sublimation. In order to study the complete process of sublimation, we must undergo the procedure that we follow in the process of sublimation. We can study that to carry out the process, substance is taken in a watch glass covered with an inverted funnel, heated slowly on sand bath. Sand bath is used in this process of sublimation and cooled with wet cotton। और हम wet cotton जो होती है वो यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो फनल है वो ग्लास का होता है तो वो टूट ना जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जब कंडेंसेशन होती है बहुत ज़्यादा वेपर्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं ना इनर वॉल ऑफ द फनल पर, यानी डायरेक्ट कन्वर्जन हो रही होती है सॉलिड की इनटू गैसियस फेज़। तो क्या होता है, और हमें ये भी पता है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसमें हीट जो होती है प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है, जिसकी वजह से हम वेट कॉटन डिपॉजिट करते हैं ताकि हमारा मतलब ग्लास फनल जो है ये टूट ना जाए, जो इन्वर्टेड फनल हमने रखा हुआ है, और प्योर सॉलिड जो होता है डिपॉजिट हो जाता है इन द इनर वॉल ऑफ फनल। ये फिगर था जो शो कर रहा है, इसमें क्या होता है बर्नर पर देखिए हम हीट कर रहे हैं और सैंड बाथ पर हमने इन्वर्टेड फनल करके चाइना डिश में अपना जो सब्लाइम मटेरियल है उसे रखा हुआ है, और इस तरह से सब्लिमेशन का प्रोसेस हो रहा है और वेपर्स जो है वो फॉर्मेशन हो रही है इन द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। Summary, hence sublimation is a purification, identification and separation technique that we use in chemistry. Here today we have studied the basic principle and basic definition, basic examples of the process of sublimation, and we can declare that sublimation was a purification technique because we are purifying our substance
and it is an identification technique in which we can identify the components present in a chemical reaction, and it is also a separation technique in which we separate our desired product into from various type of reactants present in a chemical reaction. So it was all about today's lecture. Thank you very much for your attention. If you have any question, then you can ask me in comment box, and kindly subscribe my YouTube channel for latest updates.